तो जावास्क्रिप्ट is all about logic, is all about how and why. ठीक है, how and why something is working the way it is, or how and why something is not working the way it should. जावास्क्रिप्ट का कंसर्न कोई चीज कैसी दिख रही है उससे लीस्ट रहेगा। चूंकि जावास्क्रिप्ट का कंसर्न सीएसएस से अलग है, तो सीएसएस से थोड़ी चीजें अलग भी आएंगी इसमें। यहाँ पे लॉजिक्स आ जाते हैं। जहां लॉजिक्स आ जाते हैं वहां पे कुछ चीजें अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस कॉमन है, जो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट सब में कॉमन होती है। कुछ कॉमन चीजों में से आज हम जितना देख पाएंगे वो देखेंगे। क्या है वो कॉमन चीजें, पहले एक बार नाम बता देता हूं आपको। हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस, लूप्स। ये जो चीजें हैं, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ये अक्रॉस लैंग्वेजेस सेम रहती हैं सब में। ये जो मैंने नाम लिए, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाओ, सब में सेम होती है। जावास्क्रिप्ट में भी रहती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मोस्टली जो मैंने लैंग्वेजेस के नाम लिए सभी एक ही लैंग्वेज सी, जो सबसे पहले चला करती थी, से डिराइव होती है। जावास्क्रिप्ट, जावा, पीएचपी, पाइथन, ये सब अपने सारे तरीके सी से ही डिराइव करते हैं। जो मैंने नाम लिखे, जो मैंने नाम बोले वो मैं लिख देता हूं एक बार। Again an HTML file, because browser understands HTML only. इंटरनल जेएस के साथ काम कर रहे हैं अभी के लिए। वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, नहीं पहले कंडीशंस, then there will be loops, then there will be functions, things like that. Let's talk about the most common of them all, a variable. First of all, variable is a combination of two words, vary and able. Something which is able to vary, something which is able, which has the ability to vary or to change. Vary जो शब्द है उसका मतलब होता है to change. Something which has an ability to change is a variable. That's something is a container for any data or information. So a formal definition of variable can be a container for data storage which can vary is a variable. To make you understand the concept of variable, this is how we create some variable, or this is how we store data in a variable. We write a keyword var var. This is a keyword. Then comes a name for the variable. There are very few rules for when it comes to naming a variable. We never start with numbers. We never start with special characters. All these are known as special characters. That means we start with the alphabet. No spaces is allowed in a variable like this. This is a wrong variable name. Numbers are allowed at the end or in the middle, but not at the starting. This is not correct. However, this is. और स्पेसेस के लिए या तो अगर हमें स्पेस देना तो हम अंडरस्कोर भी कर सकते हैं ना? Yes, we can do this. क्योंकि जब हम सीक्वल भी करते हैं तो हम स्पेसेस की जगह वो अंडरस्कोर करते हैं। Yes, we can do this. We can also do this. हाँ, ये कर सकते हैं। This is simply combining the two words, my and name. This is also combining the two words. इसको एक स्पेशल नाम देते हैं हम, कैमल केस। जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और सेकेंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, दिस टेक्निक ऑफ नेमिंग
is known as camel case. This is also common across all programming languages. Camel case कहा जाता है इसको, और ये तो बस अंडरस्कोर लगा हुआ नाम, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है. These three are correct. Okay. So if I have a variable, let's say variable A, since I have told you variable is container for some piece of data, this was the variable name, and after the equal sign, whatever you write, that is the value or the data contained within this variable. तो यहाँ where है keyword, A is variable name, and 1 is its value or information. Variables can contain any piece of information. It can contain some number. It can contain names. It can contain anything. One very important thing to note here, this is a very, very, very common question in JavaScript. Declaring variables or creating variables with the keyword where is actually the old way of doing things. Today, we declare variables with another keyword, let. The keyword is different. All the other things are the same. A is the variable name. 1 is the value. Semicolon means this is the end of this information. Similarly, B is the variable name. After the equals, this is the value. Okay, so this is the modern one to be replaced by var to the, where to the let. So the question arises, this is a very common interview question asked almost everywhere at initial level or even an advanced level. What is the difference between where and let? I will not tell you the answer today. I'll let you search it on your own. I'll tell you the answer tomorrow, but not today. But this is a very common question in JavaScript. ठीक है, एक बार आज आप डिफरेंस फाइंड कीजिएगा, नहीं तो कल ना. Okay, sure. वेरिएबल बनते हैं where से. वेरिएबल का मतलब होता है कि जो जिनको चेंज किया जा सकता है. सो अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से नंबर, और उसको वैल्यू दी 10, अभी अगर इसकी वैल्यू 10 है, फ्यूचर में इसकी वैल्यू 11 भी हो सकती है. वेरिएबल की वैल्यू चेंज ऐसे की जाती है. डिफरेंस देखिए, लाइन नंबर 34 पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, या इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेयर किया. दिस वाज वेरिएबल डिक्लेरेशन. Declaration simply means when we first create the variable declaration. This, or we can say creating the variable. This was not a declaration. Declaration involves the keyword. Here we were simply changing the value or modifying the value of the variable. This was no declaration. There is a difference. Here we were creating the variable. Now we were simply modifying a previously created variable. किसी वेरिएबल को कितनी बार भी आप मॉडिफाई करो, वेरिएबल है, जितनी बार वेरी कर सकते हो कराओ, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी बार वेरी कराओ. A variable can vary, can change. A constant cannot. The difference between a variable and a constant is what the name suggests. Variable can vary, constant's value is fixed. है ना, जो नाम में डिफरेंस समझ में आता है वही डिफरेंस है. We create constants using a keyword const. There is no other way to create constant. This is the only way. I have created a constant name. If I had done let name, that would have been a variable. I have done const name, that is a constant. Like here, when we declared the variable number, we assigned it a value 10, which we later changed to 11. We then changed it to 12. We then changed it to 13. We can change it to anything. We can change it any number of times. Doing so with constant is not allowed. If I were to run this program, it would give me an error. You are trying to assign a value to a constant, which is not possible.
So these two lines will give me an error. These four lines will not. So the difference between constant and variable is simple. Constant cannot be modified once declared. Variables can be modified any number of times.